हाय एवरीवन, आई एम देवाज्योति फ्रॉम IIT भिलाई, आपके मेंटर एडमिशन टेंशन से। आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक, जहां से मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस आता ही है एवरी ईयर। आपके JEE मेंस में बोल लो, JEE एडवांस में बोल लो, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सॉल्विंग मॉड्यूलस बेस्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, सो फर्स्टली देखते हैं व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स इन क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर बेसिकली द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर द एक्सप्रेशन इनसाइड द कैलकुलस मॉड्यूलस चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और वाइस वर्सा। ओके, देखते हैं इसको हम लोग। लेट्स सपोज this is one this is one quadratic equation. Okay, this is x-axis, this is y-axis. So because of critical points, the quadratic equation sign will change from positive to negative or vice versa, positive to negative or vice versa. Okay, so we have to find the critical points first, and these are critical point for quadratic equation. Any quadratic equation, this is quadratic point. Critical points 1 and 2, the places where it intersects the x-axis. So what we have to identify? The sign changes. We have to identify first the sign changes. Critical points mark where the quadratic expression equals 0. Critical points पे quadratic equation की वैल्यू 0 होती है। क्रिएट इंटरवल, आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद इंटरवल क्रिएट करना है। ओके, हम लोग एक एग्जांपल में देखेंगे, और फिर उसी इंटरवल के वैल्यूज और क्रिटिकल वैल्यूज लेके हमको क्या देखना है? मॉड्यूलस एक्सप्रेशन की बिहेवियर को जानना है। ओके, नाउ सेट अप द इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे? फर्स्टली इक्वेशन सेट करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? दिस, हाउ टू फाइंड द रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड देन मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन चेंजेस हो रहा है। हम लोग एक चीज देखते हैं, हेयर विल सी, लेट्स सपोज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c, ओके, इक्वल टू 0। आपको तीन चीज ध्यान में रखना है। पहले तो हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक रूट। x इक्वल टू प्लस माइनस a, देन माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। okay, this one, this is same, it is written, sorry, it is minus b. Okay, it's just mistake. After finding the roots, also we can check this 3 del 1 del 2 del 3. Okay, what are these things? There are 3 cases. Okay, the cases are what? If let's suppose del is greater than 0. Let's suppose it is greater than 0. If it is greater than 0, that means there are 2 real roots.
If it is equal to 0, that means there is only one root. And if it is less than 0, that means there is no real root, no sign changes. Easy? Okay. In this way, by this equation we can get the roots, and by this equation we will see how many roots that can be. But how to calculate the del? Well, that is nothing but b square minus 4ac. Okay, very easy. Okay, so what are the steps? We have written the equations, quadratic equations. After that, apply quadratic formula. We have applied. After applying quadratic formula, we have to mark the critical point. After marking the critical point, we have to write the interval. Let's suppose two critical points we have got. One equation is there. Let's suppose x square minus 4x plus 4x plus c. Sorry, in c there is 3. So what can I write here? X minus 1 into x minus 1 into x minus 3. So 2 roots are what? 1 and 3. That's are what? Critical points. On this point, the quadratic sign will change. So what can I write? The interval minus infinite to 1, then 1 to 3, 1 to 3, then 3 to infinite. So we have to check all the values in this interval, 3 to infinite, and see what are the roots satisfying those interval condition. Okay. So let's suppose in modular expression, what we will do? Let's suppose in next slide we will see. After that, let's suppose we have taken the critical point. What critical point we have got? Minus infinity to 1. So let's suppose the value we have taken is what we have taken? Less than 1. X value is less than 1. Okay. So for less than 1, if we take the value 0, let's suppose we have taken the value 0. So what will be that thing? 0 square minus 4 times 0 plus 3. So what will be the ultimate value? The ultimate value will be 3, positive. Positive means what? That modulo itself is positive. Okay. So that same thing will come out. Let's suppose if if this result comes out as a negative, then we have to multiply by minus 1. That is the operation, basic operation of modulus. Okay. After that, what we will do? We will check the roots and we will see how many roots satisfying the condition less than 1. Okay. Very easy. So, how to test intervals around critical point? Divide the line, pick the test, substitute and solve precisely. We have to choose what? See, we have to choose the critical strategic test point. Okay. After that we have to rewrite without modulus. We have to rewrite without modulus. Okay. Then substitute and determine the sign. We have to substitute and determine the sign values and solve and verify what I have discussed automatically. Then write the complete solution set. After that, you have to write the whole complete solution set. What are the solution set you have got? Here, what we are seeing, collect valid solutions. Okay. Check critical points. Gather all the solutions from each interval where the equation holds true. Then discard any solutions that fall outside their respective interval. Let's suppose that one solution does not fall within 1, which is greater than 1, so we will not calculate that. And then
Verify whether the original equation is satisfied at the critical point themselves. It is very important thing you should remember. You always used to do interval points, but you never do check on critical point. Always remember to check interval with including critical. After that, write your final answer using interval notation, using union, and don't do mistake doing union and intersection. Okay. Next, what are the tricks and tricks? You have to be mastered in sign testing. Always simplify the modulus equation into piecewise cases using critical point. Practice 20 plus problems regularly. These are very easy. You can do easily and you will get interest. Sign errors are the fast mistake. Remember, recognize common pattern. Familiarize yourself with three main types: single modulus, nested modulus, and quadratic inequalities. Okay. Use determinant to find the roots. Is this equation is really having 0 root, 1 root, 2 root, or no root? Optimize the time management. That is very important. So ऐसे आप लोग एक क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस पे मॉड्यूलस लगा रहता है, पहले क्या करेंगे आप उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट से इंटरवल निकालेंगे, इंटरवल निकालने के बाद इंटरवल के पॉइंट्स पे इक्वेशंस को मॉड अप्लाई करके, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज अप्लाई होगा, फिर केस को सेटिस्फाई करना है इफ इंटरवल के अंदर पॉइंट्स सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. ठीक है, लेट सपोज हम लोग एक इक्वेशन ले लिया कोई भी, जैसे ये, तो उसमें एक पॉइंट लेट सपोज हम लोग इक्वेशन अप्लाई किया, इसके बाद हम लोग का वैल्यू आया -1 विच इज सेटिस्फाइंग द इंटरवल. दैट इज ट्रू, वी कैन इंक्लूड दैट पॉइंट. गॉट इट? ऐसे ही आपको मॉड्यूलस बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को अप्लाई करना है, रूट्स चेक करने के लिए. थैंक यू. एडमिशन जंक्शन के सारे हैंडल को आप फॉलो कर दीजिए, विजिट करिए student.admissionjunction.com. ऐसे बहुत सारे पीडीएफ्स के लिए. कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इजी जो और जिसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, फॉलो करने के लिए आप जुड़े रहिए एडमिशन जंक्शन के साथ.